सनातन है तो सनातन है, नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। 75 साल में जो पहला प्रधानमंत्री आया जो राम मंदिर के लिए पहल की, मोदी का कृपा के हम लोग भी मंदिर भी देख पा रहे हैं। 500 साल हम लोग का बाद वाला उद्घाटन हो रहा है, ये तो बड़ी बात है। हमारे कंकण में राम, जय श्री राम। रामचंद्र वनवास आया था यहाँ, इसलिए कि अयोध्या नाम हुआ। In today's episode of Kan Kan Mein Ram, we tell you about the magnificent Ayodhya Hills in Purulia. Waterfalls, lakes and streams dot the face of this land, preserving the lush green descendants of those fortunate trees which once must have shaded Lord Ram, Mata Sita and Lakshman. The temple of Raghuvira is built here through the nature itself. It is believed that water sprang from the earth here at a point where Ram pierced the ground with an arrow to provide fresh water for Sita Mata. That timeless pond remains an eternal pool of love and devotion, aptly named Sita Kund. सुनने में आया था कि जब राम जी वनवास निकले थे 14 साल के लिए, एक रात के लिए हम लोग का अयोध्या में उतरे थे, एक रात के लिए। उसी हिसाब से नाम पड़ा ये भी अयोध्या। The innocent magnificence of the natural beauty here automatically takes us back to a different world. When the royals of Ayodhya, the gods of the people, Ram, Sita and Lakshman walked on this soil. A quaint shrine dedicated to Ram draws many worshippers here. The peaceful surroundings off the beaten track enchant travelers and devotees alike. The Ayodhya Hills region is home to many tribals, predominantly the Santals, whose lives are closely intertwined with the earth and its gifts. They revere nature and preserve traditions that have endured the passage of time. One such tradition is the sport of hunting on the full moon night of the month of Baisakh. Locals such as the Santhal, Bhumij and Munda tribals of nearby areas join in a nocturnal campaign to catch various game which the whole community then feasts upon the next day. This ritual is called Disum Sendra and highlights the intimate relationship between people, animals and nature in these parts. Ayodhya Hills sheltered the incarnations of God Himself, the definers of Indian history ages ago. Today, over 700 kilometers northwest, in Ayodhya, Uttar Pradesh, the song of Ramayana is about to be sung once again. A grand mandir, a broken legacy rekindled. The sacrifices of uncountable devotees is being redeemed at the birthplace of Sri Ram. A tribute only worthy of the hearts of Ram Bhakts who saw in Maryada Purushottam the seventh avatar of Vishnu. मोदी का कृपा के हम लोग भी मंदिर भी देख पा रहे हैं। 700 साल बाद हम लोग रामलला को टेंट से मंदिर में ले जाकर के 22 तारीख को स्थापना करेंगे, ठीक है। वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब कि उनको आज क्या और 10 साल उनको रहना है प्रधानमंत्री इस देश का। इनकी सारी मेहनत का फल है, नहीं तो बहुत लोग रहे हैं मंत्री, लेकिन किन्हीं के बस में नहीं था।